the pain that people endured. My father once told me, "It's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief." These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer, and my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Nadeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Nadeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. A very good evening to all of you in this evening live interactive session of ours, where we generally try to answer the maximum of your questions. A very good morning to all of you who are joining us from US, from Canada, and from other parts of the globe. And as we generally do, we directly shall be starting with your questions, and once we have taken some of your questions, there are some important points about Ayurveda which are to be discussed with you, but not before I have taken your questions. So the first question over here is from Archana Wilson ji. You have mentioned, "Hello sir, I am Isaac's mother. You have shared his patient code. My question is about diet change given." Archana ji, can you please elaborate on what kind of diet change has been guided to you, and a few things about your child also. And in the meantime, any doctor who is there online with us and has joined live from our organization, 466942. I would really appreciate if I can be shared some details about Mr. Wilson's case. So please share the details, and in the meantime, Archana ji, if you can help me out with the details, I would immediately be taking your question and answering you in that regards. नीतू तिवारी जी, आपने अपना पेशेंट कोड दिया और आपने बताया, सर मेरा नाम नीतू शुक्ला और मेरा बेटा काव्यांश 4.8 ईयर्स का है, बोलता नहीं है, हाइपर एक्टिव है, आई कांटेक्ट भी ठीक नहीं है, सर क्या अभी हम उसको ठीक कर सकते हैं? नीतू जी बिल्कुल निश्चिंत रहें. देखिए, आपने जैसा कि बताया 4.8 ईयर्स का है काव्यांश. सो कहीं ना कहीं जो काव्यांश की रिफ्लेक्स लैंग्वेज डेवलपमेंट एज है वो हमने क्रॉस कर ली है. जब हम रिफ्लेक्स लैंग्वेज डेवलपमेंट एज की बात करते हैं तो ये वो एज होती है जहाँ पर एक बच्चा बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, केवल अगर उसकी कमियां दूर कर दी जाएं, तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अपनी मातृभाषा सीख जाता है और कहीं ना कहीं वो वर्बल हो जाता है. लेकिन एक बार जब हम 4.5 साल की एज को क्रॉस कर जाते हैं तो अब वो एज चले जाती है. अब जब हमें बात करनी होती है, वर्क करना होता है उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे, तो ये उसकी ट्रेनेबल एज है. तो यहाँ हम जोड़ देते हैं आयुर्वेद की जो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करने वाली हर्ब्स हैं उनको, और साथ के साथ अप्लाइड बिहेवियर एप्लीकेशन ABA को. सो बिल्कुल अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, आप थोड़ा सा सहयोग हमें दें और जो चीज़ें हम गाइड करें अगर आप उनको फॉलो करें, तो डेफिनेटली हम एक ऐसा बच्चा जो 4.8 ईयर्स का है उसको वर्बल कर सकते हैं. बट देन प्लीज़ आप कुछ वीडियो शेयर करें बेटे की, कुछ डिटेल शेयर करें और घबराएं नहीं. अभी भी वो ट्रेनेबल एज पे है. अगर हम ABA के थ्रू नीड क्रिएट करेंगे और सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करेंगे, ज़रूर आप देखेंगे कि वो वर्बल हो जाएगा. संजय जी आपने, और इससे पहले अर्चना विल्सन जी हैव गिवन, कैन वी गिव हिम चिकन? सो अर्चना जी, माय रिक्वेस्ट, नो. एज ऑफ नाउ avoid giving chicken if I have guided you about being a bit vegetarian, and also share the details about the problems, the current problems that he is facing right now. And I still am waiting about the details about Isaac's case. The code is there with us. Team, you need to be providing me with the details as quickly as possible. So हम आगे चलते हैं. आगे संजय जी आपने लिखा है, ID दिया है, और 19 she had convulsions, jerks which lasted for more than 90 minutes.
Are these two events related? From today, her jerks have gone up compared to last week. Will the jerks subside comparatively? Dr. Sakshi and Shikha ji are aware and have all the details. Shruti's monthly medication is supposed to be dispatched in a day or two. Sanjay ji, in that case, what I can do is, and what should be done is, that in case you feel that there is an increase in jerks, although the designated curriculum for us to be on a video conferencing session needs to be after 6 months, every 6 months, but here, since we are facing some problem, I am immediately guiding my team. You can get back to team and I can prepone a video conferencing session for you where we can connect, where we can discuss all the case, because in case there are more jerks, we need to be changing the things. Don't carry on with the same things. And moving ahead, there are some details which have been shared my way, but since they are not attached with anyone, like keep talking to yourself after raising your head, this must be for some patient code, but unluckily since I am not having the details, I won't be able to proceed in that regards. Further, Prince Kumar ji, आपने बताया है अपना कोड बताया पेशेंट और आपने एज बताई है और आपने बताया है एलोपैथिक मेडिकेशंस आर गोइंग ऑन एंड द मेन कंसर्न इज हाइपर एक्टिविटी understanding, and there is an issue of repeating the words. So at the age of 10, if the allopathic medications are going on and you have mentioned that he keeps talking to himself after raising his head, there is non-stop laughing, and that is without reason, and sometimes he lives in imaginary life. Potty can't be detected, he tells after doing it in pant. That means we need a toilet training also to be there. Repeating the same things again and again, getting angry all of a sudden, punching someone else and punching himself too, overexcited about everything, and then sit peacefully with each other. See, if I talk about Prince Kumar, the details which have been shared my way since the age is 10 years now, my firm guidance to you as parent is that, see, since the number of problems are more and there is understanding issue also, please do ensure that you can be connected to one of our doctors, even if it's not me at the age of 10 years. We should not be going immediately with a lot of medications. However, before you are connected with any of our doctors, to provide some soothingness to the subconscious mind and to increase the concentration span, to reduce hyperactivity a bit, Brenoir is the ideal choice over here. So till the time you can get the support from our team, you can go for Brenoir capsules if he's in a habit of taking capsules, or you can go for Brenoir syrup if he is not quick in taking capsules. So this is one of the things which you need to start till the time you are connected to one of our doctors. Plus, please don't forget, for a proper treatment, you need to be connected with one of our doctors, as the age of the child now is 10 years. And Neetu ji, आपने आपके कोऑर्डिनेटर दीपिका ने मुझे डिटेल शेयर किया है कि देयर इज स्पीच डिले, हाइपर एक्टिविटी है, सोशलाइजेशन कम है, आई कांटेक्ट वीक है, कमांड फॉलोइंग इज़ गुड, और एलोपैथिक ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं. सो कैन यू शेयर सम डिटेल्स ऑफ द एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो कि आप दे रहे हैं. एंड जैसा कि काव्यांश अभी 4.8 ईयर्स का है, दो चीज़ें आप इमीडिएटली काव्यांश के लिए ऐड कर सकती हैं. नंबर 1, आप स्टार्ट कर सकती हैं काव्यांश के लिए ब्रेनवार, जैसा कि मैं अभी पेशेंट को बता रहा था. और नंबर 2, पम्पकिन सीड ऑयल. ये दो चीज़ें आप इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए, और फिर इन बिटवीन जब भी मौका मिलता है आप हमारे एक डॉक्टर से, किसी से सीनियर से कनेक्ट ज़रूर करें. लेकिन इन दोनों ही चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि आपका बच्चा अब एक ट्रेनेबल एज में है, तो ABA करवाना, अप्लाइड बिहेवियर एप्लीकेशन का सहारा लेना एक बहुत अनिवार्य चीज़ है. तो प्लीज़ आप वो बिल्कुल मत भूलिएगा. आगे मेरे पास जो डिटेल्स आई हैं नरेंद्र जी की तरफ से आई हैं, और पेशेंट कोड आया है, और मुझे साथ के साथ डिटेल्स बताई गई हैं, जिसके लिए मैंने अभी जवाब भी दिया प्रिंस कुमार के केस में. सो आई होप पेरेंट्स, अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं उस रिगार्ड्स में, यू आर वेलकम टू राइट इट डाउन एंड आई विल इमीडिएटली बी गाइडिंग यू इन दैट रिगार्ड्स. राम मिश्रा जी, आपने अपना पेशेंट कोड बताया है, आपने बताया है आयान मिश्रा, आपके बेटे का नाम है, एज 5 ईयर्स है. ही जस्ट कीप्स ऑन सेइंग those few words that he studies or he watches on TV. He doesn't give eye contact. राम जी, एक तो देखिए, हमें कोशिश करनी है, हमें टीवी का जो टाइम हम दे रहे हैं उसको कुछ घटाना है, और दूसरा,
अगर वो टीवी वाले वर्ड्स, if he is repeating those words which he is listening to on TV, that means he is capable of being verbal. He is preferring not to use those words while communicating. That means, once again, it is the subconscious stubbornness which is forcing him to do that. So our work in this case also has to be on the subconscious mind through one of the subconscious working herbal combinations, like it can be brainoir, it can be pumpkin oil, it can be mukta. So these kind of things need to be used for your child. But the most important aspect over here is creating a need for him where he knows that usage of words shall make his life easier. So that happens once the parents are trained for ABA. See, this is a thing which is common to everyone. All those parents who are there with us, we all love our kids. And in today's era, when we are having one kid or two kids, now it becomes very important for us as a parent to understand that giving too much love and affection is good, but showing it in the form of making the life too easy for your kid is not good. So when we are giving too many things to the kids without them asking for the same, they are forced to start using sign language. So it becomes very important that if we want to make a child verbal, ABA is used in a very technical way, and slowly and gradually new words are added in the vocabulary of the child. Now that is something which is very important for a child who is around 5 years of age and now is non-verbal but is having the capability to use words. Going ahead, I am having the details about Mr. Sanjay. Dr. Sakshi has shared some of the details with me, and Shruti's age is 21 years, and in the month of January we connected with each other, and while doing Nasya, mistakenly you did a spill of hot water, and there was an injury. First aid was taken, and after that there were continuous seizures for half an hour. After that, which was stable. Always remember, whenever there is an injury for a child, it is a mental trauma along with being a physical trauma. So yes, definitely, if that happens for a child, it can be agonizing, it can precipitate certain seizures. So do a bit of counseling for her, soothe up her a bit. The medications which are to be applied on the wound are adhd. You can get it of any important company, or that important company, any important company can be used for that, like any good company like Nagarjuna you can use of Are Vadyashala Kotekal, any company which is good in preparing Jatyadi Keram that can be used for application for your child. You are giving her Brenoir, Anapsamar, Sarpagandha, then Vatudhans Ras, Yogendra Ras, Vayuhar, Maha Panchagavya and Jetamansual. The medications are good enough. If anything shall be required, it shall be reduction in the number of medications. We do not need to increase the number of medications. So it's more of counseling, it's more of a bit of meditation, it's more about Shiropichu, it's more about consoling the child, making her relaxed. And then the things will become easier for her and the seizure frequency will come down rather than piling her up with new medications. Ikra Patil ji. You have shared the details and you have shared that Asas, 3 years, 8 months old. The question is, he don't speak a single word. When he will be able to speak? What is the reason behind his body rocking, verbal stimming? See, what happens is when a child is not able to be verbal to that an extent, at an age of 3 years, 8 months old, he has to get the emotions out by some method. So stimming is something which is very common in such children. As a result of that, the main area to focus in a child like Asas is making him verbal. He still is in a reflex language development age. So when a child is in a reflex language development age, if we start working on language development, that occurs very quickly. So this age is very important, specifically the next 6 months are really very important. So we directly need to be working on the language skills, communication skills. If he is not hyperactive, then Breno A will be used in the morning time and Breno R will be used in the night time. And there will be some other combinations which we'll be using. Please get back to one of our doctors
And don't waste these first precious 6 months. It really matters if a child is below 4.5 years of age, because at that stage the recovery is really very quickly, very quickly. So that is something which we should not miss out on. And if something is required, specifically in case of ICRA, Seema, you can note it down, that since he is at an age where we cannot delay the treatment for this child, you can prioritize his video conferencing schedule curriculum so that we can be quick in guiding this child. So my team will be getting in touch with you. We'll try to prioritize your connection with me, because I don't want to miss on these precious 6 months in this case. Babita Malik ji have shared your patient ID. And sir, I have been more than 1 month, as we can see the changes in her. I just want to know, can she speak as her hyperactivity is less now? Will she be able to recover? Babita ji, that's really great to know that now you are getting some changes. Be rest assured. It is with that motive only that we connected with each other. Don't forget to be regular on the ABA part. Keep on sharing the videos with us. That will be really appreciable. Don't worry. She will be able to speak. The hyperactivity is now down. That means she will now be listening to many of our guidelines. My team will be working on the speech part also. But again, that has to be done through ABA by creating a need, not by forcing the child to speak, not by commanding the child to speak. That is an easier method of bringing speech in a child, but that is not something which we want. We want the child to be verbal by himself or herself rather than by commands. Okay, so don't worry, be regular. Neha Thakur ji, aap dekha sir, there is improvement in the child, but these days he is having sleep issue. Please tell me something for this. Mrit Sanjeevani Sura can be taken at night. It's good to know that the child is improving. मौसम माहिन जी, आपने कहा हाय सर, मेरा बेबी 3.5 इयर्स का है, उसका स्पीच नहीं है. देखिए 3.5 साल के ऊपर माहिन जी, अगर बच्चा हाइपर एक्टिव नहीं है, हाइपर एक्टिविटी नहीं है, तो ABA और ब्रेनो ए का इस्तेमाल करके स्पीच बहुत जल्दी लाई जा सकती है. तो अगर वो हाइपर एक्टिव नहीं है तो हम ब्रेनो ए का इस्तेमाल करेंगे, साथ में इस्तेमाल करेंगे सारस्वतारिष्टम विद गोल्ड. लेकिन अगर वो हाइपर एक्टिव नहीं है, अगर आपको उसमें हाइपर एक्टिविटी भी लग रही है, फिर पूरे का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा. हम आगे चलते हैं और इन्हीं के केस में आपके जो कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने भी बताया है कि कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है और स्पीच पे ही आप मेजर जो है वो टारगेट करना चाहते हैं. सो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चीज़ें स्टार्ट करें. हाइपर एक्टिविटी के बारे में मैं चाहूँगा मौसम माहिन जी के केस में या तो सर आप बताएं बच्चा हाइपर एक्टिव है कि नहीं, या इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वो ये ज़रूर बताएं. हम आगे चलते हैं और राम मिश्रा जी, आपके भी कोऑर्डिनेटर ने मुझे बताया है कि आयान के केस में 5 साल की एज में आप स्पीच और कम्युनिकेशन डिले पे आप बढ़िया वर्क चाहते हैं. हाइपर एक्टिविटी और आई कांटेक्ट भी सही नहीं है, लेकिन क्योंकि एज 5 साल हो चुकी है, हम डायरेक्ट स्पीच पे काम न करके इनडायरेक्ट स्पीच पे काम करेंगे और हमारा पहला वर्क रहेगा हाइपर एक्टिविटी घटाने में, कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाने में. हम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर प्रायोरिटाइज करेंगे वर्क को. मिस्टर जोशी, विश्केशना जोशी जी, आपने देखा नमस्कार सर, हाउ कैन वी इम्प्रूव द कमांड फॉलोइंग एंड वॉइस लाउडनेस? Command following can be improved in 2 ways, ma'am. It depends upon the age of the child and the level of autism the child is suffering from. If autism is too severe, then OT is the kind of therapy and pathy of choice. If autism is mild or moderate, then ABA is the better choice. So please elaborate on this thing further and I will be guiding you in this regards. Monishita ji, namaskar. आपने बताया है पेशेंट कोड एंड यू हैव मेंशन दैट माय सन इज 4 years old, he can speak some sentences, poems, but can't understand everything. Remains in his own world, too much self-talking, hand flapping, has learning disability. Monishita ji, it's good to know that he is using words. We want the cognition to improve. We want him to be understanding what he is speaking. One thing, connect him spiritually. Involve him more into spirituality. Once you involve him into prayers, any prayer. See, for him, prayer is basically meant to enhance the working of the pre-conscious mind. You will see he will start being less lost in his own world. And then, since I don't feel in your question that there is much hyperactivity, so Brain A has to be used in the morning and R has to be used in the evening. Saraswata Rishtam with gold is again something which is very good for your child. Shiro Pichu
which is an Ayurvedic procedure of Panchakarma, which can be done by you at your own home, is again good. And last but not the least, you need to be trained a bit for ABA. You basically, whenever I talk about ABA and whenever I talk about any person who has to be trained about ABA, see, parents generally confuse about getting their children trained about ABA. Do remember, it is you guys who have to be trained for ABA. We train parents, and the parents then become the psychotherapist for their child, and that is something which really helps. There is a patient code and 469007, but I have missed on the previous questions. Then Twinkle Kapoor, sir, my friend's son Ashish, age 6 years, was having no speech and hyperactivity but getting. Thanks a lot, Twinkle Kapoor. And Babita ji, you have again shared. ID, sir, age is 7 years. It has been more than 1 month. That's really very great. And if Babita ji, we can at some stage do some Panchakarma therapies also, that is always very helpful. So trying doing some therapies at your home, which are easy to do at home. At some stage you can plan a in-house therapy also, but as of now, don't forget to do some Shiropichu at your home. That is very important. And coming further, Anand Bansalji. Mr. Bansal, you have shared that your child's age is 2.9 years and having some signs of autism. And Atharav is the name of the child. No words, flapping of hand, no mummy papa, self-punching, teeth grinding. See, 2.9 years. Again, whenever a parent approaches us somewhere at a age which is less than 4.5 years of age or 4 years of age, that is a reflex learning age, and that really is an age of choice for us. So what we should be doing at this right age is that we should not be wasting the time below 4.5 years of age. It's not a case that after 4.5 years we are not able to see any recovery or do something. But what happens is after 4.5 years of age, the child goes at a trainable age. Things can be done at that age also, but they are slower as compared to an age which is below 4.5 years of age. Since your child is 2.9 years of age, in case, share some videos, let us analyze those videos, and don't waste this age. This is the most important age where a child can very quickly come out of autism. You have diagnosed a bit of problems in your child at the right age. It should be as quickly as possible that we bring your child to a normal child before 4.5 years of age. That is very easily possible at a child in 2.9 years of age, because after 4.5 years of age again it is possible, but as I said, the time required is much more than below 4.5 years of age. So share some videos, and then you can connect on a video conferencing session with one of my doctors, and then you can be guided certain things. Going ahead, there are multiple questions where the details have been shared, but unluckily the numbers, the details, there are somewhere patient code is missing and somewhere the details are not attached. So I am prioritizing those questions where everything is there, which is there to be answered. Arunjit, it's really good that your son Chiku has a lot of improvement now. He requires more improvement in communication. We'll be working on that also. Don't worry, and do remember that you should not miss out on the regular ABA sessions, because that is something which really works a lot for communication. Vinuji, you have mentioned the details. Sir, just 2 weeks of medicine and ABA therapy. My son's sitting tolerance has increased, understanding is low, but academic understanding is superb. How to go with daily activities? Vinuji, try being a help for your son's daily activities rather than being a guide for her. Always set an example. We can do a puppet. We can use a puppet for guiding. It is known as imitation technique. You can discuss it with one of our AB experts. Imitation is the ideal thing to be training such a child rather than commanding and guiding. And going ahead, and Bhim Singh ji, you have shared your patient code and keep talking to yourself after. I hope, Narendra, I shared everything about Bhim Singh ji. In case something is missing, do update me about that. And going ahead, Faham Sadiq ji. Faham Sadiq ji's question, I feel he might be missing again and again. Please share the question with me.
and Gaurav ji has mentioned about that. And then Gyan Ranjan ji, you have shared, sir, my son Divyanshu is not able to brush properly, is taking the paste inside the belly and not able to take bath at 14 years. And Gyan Ranjan ji, are rest of the things good? Is he verbal? Where do you rate the cognition? How much good he is in other activities? Please share the complete details, and then I'll be able to guide you in a proper way. And patient code of Ayan is there with us. गोइंग अहेड विद आनंद भट्ट जी, सर मेरा बेटा प्रियांश अब ठीक है, बस कभी कभी हाइपर हो जाता है, क्या कर सकते हैं? आनंद जी बहुत बढ़िया बात है बेटा, ठीक है, बीच बीच में आप मुक्ता पिष्टी ज़रूर जो है उसे इस्तेमाल कीजिए। मुक्ता पिष्टी जो है ना उसको नहीं हाइपर होने देगी बिल्कुल भी, और लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए सेफ़ है। भरत जी, हाइपर एक्टिविटी के लिए पम्पकिन ऑयल इस केस में यूज़ करना है हमें। और हम आगे चलते हैं। सादिक जी, आपने कहा माई सन फहाम सदीक इज़ 12 years old, काइंडली सजेस्ट डाइट फॉर हिम। एंड सी एज फार एज डाइट इज़ कंसर्न, फहाम जी देखिए, देर आर नो मच restrictions in diet from my end for a child who is suffering from autism, apart from the fact that we need to be giving him a diet which is more easily digestible. If you are using non-veg diet, prefer using the more digestible and easily digestible one. And if there are vegetables, again, the more easily digestible one. We are to take care of the tone of the stomach and digestive tone we are to take care of. एंड जैसे कि आपने बताया है, पहले हाइपर होता था, अभी बेटर है, एक दो वर्ड बोल पाता है, कभी कभी गुस्सा करता है, आई कांटेक्ट अच्छा है, कमांड फॉलो करता है, 60% अवेयरनेस है, पहले ठीक था फिर फीवर हो गया तो टेबलेट्स दे रहे हैं। देखिए, एक तो आप पम्पकिन ऑयल, कद्दू के बीजों का तेल तो आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। मोती की पिष्टी भी हमदर्द की आती, पाकिस्तान में ही अवेलेबल है, आप इमीडिएटली स्टार्ट करिए। हमारे पास से केवल और केवल आपको उसके केस में ब्रेनो आर इस्तेमाल करना है, वो डेफिनेटली नहीं मिल पाएगा। एक सिंगल चीज़ जो हम चाहेंगे वो हमारे पास से इस्तेमाल करें अच्छी डोज में, ब्रेनो आर है। मुक्ता पिष्टी और पम्पकिन ऑयल दोनों चीज़ें पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगी, वो आप स्टार्ट कीजिए इमीडिएटली। हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट आ गया है हमारे पास क्वेश्चन अग्रण्या का। हाइपरएक्टिव, इनकंसिस्टेंट आई मूवमेंट, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिपीटिंग। मुझे थोड़ा सा अग्रण्या का एज अगर नरेंद्र आपकी तरफ से मिला होता तो मैं और बेटर गाइड कर सकता था अग्रण्या को, बट क्योंकि एज नहीं है तो मैं कुछ ऐसे गाइड नहीं करना चाहूँगा बिना एज के। अगर आप हमारे साथ हैं, अग्रण्या के पेरेंट्स हैं, कुछ वीडियोस प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल सही प्रकार से हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको। अच्छा, आपने लिख दिया है मौर्या जी, अगर अग्रण्या की जो एज है, क्या हम ये अग्रण्या की बात ही करें, 2.2 years है अगर, तो अपने आप में सही एज है। आपने बताया है कि कंप्लीट लो ऑक्सीजन वाज देयर, ऑन वेंटिलेटर, लो बर्थ वेट वाज देयर, NICU में रही है, तो हो सकता है उस केस में कि कहीं ना कहीं पे कुछ उस टाइम पे ब्रेन डिप्राइव्ड रहा हो ऑक्सीजन से। तो अगर आपने MRI करवाई है अग्रण्या की तो आप प्लीज़ शेयर करिए। अगर MRI नहीं करवाई है तो हम तब भी ये मान करके चलेंगे कि हमें ब्रेन को नरिशमेंट देनी है। तो आपकी बिटिया के लिए कद्दू का जूस, कद्दू सब्जी के तौर पे बहुत बढ़िया है, वो आप खिलाया कीजिए। सारस्तारिस्टम विद गोल्ड आप नरेंद्र आपको इस्तेमाल करनी है, और ब्रेनो ए करनी है मॉर्निंग में, दोपहर को, रात को ब्रेनो आर इस्तेमाल करनी है आपको। इसके अलावा शिरोबस्ती बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, शिरोपिचू, शिरोबस्ती, शिरोधारा, जो भी पॉसिबल हो पाए बच्चे के केस में, दैट रियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अग्रण्या के केस में अगर कोई MRI है तो मैं वो भी चाहूँगा कि हमारे साथ शेयर ज़रूर की जाए। हम आगे चलते हैं और विदिशी जी, आपने बताया है आई शेयर्ड MRI रिपोर्ट टू योर टीम, कोऑर्डिनेटर नेम इज़ मनीष सर, please check our report, respond to Manish ji, which treatment is best for him, child name is Dakshit, and you have shared the details about the person, Mr. Anand। सीमा, आप मनीष जी की सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर रुचि को फॉरवर्ड करवाएं ताकि एक बार एनालिसिस हो सके, एंड डॉक्टर रुचि विल बी कनेक्टिंग विद यू ऑन माय बिहाफ विदिशी जी, और फिर आपको पूरी जानकारी हम देते हैं। अभी जी, आपने अपने बच्चे का
एज बताया है 3.2 years. Now we saw autism sign and he's being hyperactive. But Abhiji, as I just mentioned, 3.2 years. An ideal age, a reflex language development age where we can really make the child verbal very quickly. So don't worry, you are there with us at a right age. दक्षिता की एमआरआई और ईईजी टेस्ट आपने प्रीति जी करवाया और आपने सेंड की है. ईईजी की रिपोर्ट नॉर्मल है लेकिन एमआरआई की रिपोर्ट में इशू है. सो मुझे पूछना है कि मैं अपने ट्रीटमेंट किस तरह से शुरू करूं, कब तक ट्रीटमेंट चलेगा और क्या क्या करना पड़ेगा. इस रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम है, क्या ठीक हो सकता है, कितना चांस हो सकता है. मैं बिल्कुल समझ सकता हूं जी कि आपने एमआरआई की रिपोर्ट विदिशी जी शेयर की है, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए. जैसे ही वो एमआरआई की रिपोर्ट्स मेरी टीम मेरे से डिस्कस करती है तो आपके सारे सवालों के जवाब के साथ आपके साथ एक बार डॉक्टर रुचि जो हैं वो कनेक्ट करेंगी. हम आगे चलते हैं और अभी बहुत से क्वेश्चंस हैं लेकिन माफ़ी चाहूँगा कुछ क्वेश्चंस आज मिस हो जाएंगे मेरे से, क्योंकि जो मैं समय देख रहा हूँ हमारे लाइव सेशन का समय जो है वो हमारे पास इतना ही था. तो आप में से वो लोग जिनके क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया हूँ मैं माफ़ी चाहूँगा. और मेरी आपसे विनती भी रहेगी, जो नंबर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर्स, इन नंबर्स के ऊपर आप अपने क्वेश्चंस हमें पोस्ट कर सकते हैं अपने बच्चे के कुछ वीडियोस के साथ. तो जब आप वीडियोस शेयर करेंगे तो उन वीडियोस पे आपको हम पूरी की पूरी जानकारी गाइड करेंगे. तो इसी के साथ साथ मैं सचिन जी जाने से पहले आपका क्वेश्चन मेरे सामने है तो आपको बताना चाहूँगा. देखिए, जैसे कि आज आपने ज्वाइन किया है मेरी वेबसाइट्स के ऊपर से, मेरी एक वेबसाइट है drnavdeepsharma.com. तो कभी भी आप ये देखना चाहते हैं मैं भारत में कब अवेलेबल हूँ, मैं यूएस में कब जा रहा हूँ, कनाडा कब अवेलेबल हूँ, यूएई कब अवेलेबल हूँ, करिकुलम्स को लेकर के आपका कोई भी सवाल होता है आप यहाँ तो इन वेबसाइट से देख सकते हैं. या उसके लिए जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है अपने कोऑर्डिनेटर से अप्रोच करने की जगह पे आप प्लीज़ कोशिश किया कीजिए कि आप डायरेक्ट हेल्पलाइन पे एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कीजिए ताकि हम आपको पूरे सही तरीके से गाइड कर सकें. क्योंकि मेरी एक ही कोशिश है, मेरी एक ही विनती है, अगर आपका ट्रीटमेंट मेरे अंडर चल रहा है, जल्दी नहीं 6 महीने में एक बार, once in 6 months, it is very important for us to connect. सो मैं आपके क्वेश्चंस एक्नॉलेज तो ज़रूर कर रहा हूँ. ज्ञान रंजन जी, विक्रांत जी, अनलकीली अभी मैं उन क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अभी मुझे आपसे आज्ञा चाहिए होगी. मैं इन क्वेश्चंस का जवाब आप हेल्पलाइन पे शेयर करते हैं तो अपने डॉक्टर्स के थ्रू आपको कम्युनिकेट करवाता हूँ. आप याद रखिए, ऑटिज़म एक अवस्था है. उस अवस्था से एक बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है अगर हम खुद इस चीज़ पे भरोसा रखें कि हमारा बच्चा ऑटिज़म फ्री हो सकता है, और अगर हम सही फैसले और सही कदम लें और हर हाल में अपने बच्चे को जो गाइड किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम समय ज़रूर दें. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. Empowering lives. Group activities for autism at ND Care Nirogam Private Limited. A very marked problem which is being faced by majority of autistic kids is socialization. The children, they do not perform up to the expectations of their parents, the society, when it comes on the part of social interaction with other children. And that is why, keeping this in mind, we at our Rish Push Center Chandigarh go for various social activities. Inspired by the rich culture of Amritsar, we are rooted in tradition and diversity. Drawing energy from the vibrant city of Chandigarh, we embrace progress and inclusivity at ND Care Nirogam. Why stay at ND Care Nirogam for best results in autism? Ayurveda, Panchakarma, psychotherapy, ABA, OT and speech therapy, yoga and naturopathy, group activities, outdoor activities, all under one roof. Welcome to ND Care Nirogam, where we believe in creating a supportive community for individuals with autism. Today, we are excited to share how our carefully crafted group activities are making a positive impact on the lives of those we serve. At ND Care Nirogam, our team is dedicated to designing activities that cater to the unique needs of individuals on the autism spectrum. Our group activities are more than just fun. They are therapeutic and designed
to foster social skills, sensory integration, and overall well-being. Art therapies provide a non-verbal way for individuals with autism to communicate and express themselves. It's amazing to see the creativity that unfolds during these sessions. Exercise is not only beneficial for physical health, but also for emotional well-being. Our group exercise sessions focus on building strength, coordination, and social skills. Specialized Panchkarma therapies at Wrist Pusht. Another recovery story of autism treatment. Patient name, Vivan, age, 4.5 years old, disease, autism. Chief complaints, speech delay, less understanding ability, inexpressive, sensory issues, lack of focus. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 27 November 2022 at 11 o'clock am and felt the scope of treatment to work for the child. The chief complaints were speech delay, unable to write and sensory issues. The child could not write by himself. He was also not very socially active. Throughout the treatment, significant improvement was seen in the child. He started writing on his own, gave answers and also became active. He started interacting more and gave answers instantly. His focus also saw an improvement. He also participated voluntarily in activities and also excelled academically. Instant responses were also seen within a few months of treatment. With improved attention span, he became quick in recognizing and mind games as well. He was able to interact more with peers, participate in class and also understand things in a better way. हाय, मेरा नाम प्रिया है एंड मेरा बेटा है 5 साल का होने वाला है एंड मुझे नवदीप सर से मेडिसिन लेते हुए मोर देन 1 ईयर हो गया है एंड आई हैव चेंज लाइक आई हैव सीन इमेंस चेंज इन माय सन लाइक जब हम यहाँ पे आए थे तो ही वॉज लाइक वो एक एक वर्ड ही बोलता था एंड जब से हमने मेडिसिन शुरू की है एंड मेडिसिन के साथ साथ शिरोधारा भी इसकी मोर देन 1 ईयर से चल रही है एंड विद कंटिन्यूटी ऑफ दिस मेडिसिन एंड ऑल उसमें ड्रास्टिक चेंज है। जैसे अभी वो सब कुछ अपनी चीज़ें 99% अपनी चीज़ें वो बता पाता है ईजिली एंड दैट टू दे स्टार्टेड मेकिंग फुल सेंटेंसेज ऑल्सो। क्लास में भी अकेडमिकली ही इज़ गोइंग सुपरबली ऑसम। ही हैज स्कोर्ड 88% इन हिज लास्ट टर्म एंड जहाँ पे जब वो नर्सरी में था ही जस्ट स्कोर्ड 55%, नॉट इवन 50%। एंड अभी जस्ट टर्म ए में ही इज़ इन जूनियर केजी, अभी टर्म ए में उसके 88% नंबर आए हैं। नाउ ही हैज स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो। पहले वो मतलब पकड़ के लिखता था, पेंसिल पकड़ के, उसका ग्रिप भी प्रॉपर नहीं था बट अब वो लिखने भी लग गया है। प्लस मुझे जो मेडिसिन से जो मुझे मेन फ़र्क दिखा है दैट इज़ सेंस, जो मुझे चाहिए था कि सेंस में थोड़ी सी डेवलपमेंट। पहले उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि कोई घर में आ रहा है जा रहा है, वो जस्ट कमांड वाइज ही चल रहा था। लाइक ही स्टार्टेड फॉलोइंग माई कमांड्स लेकिन अपने दिमाग से वो कुछ नहीं कर रहा था। बट जब से मेडिसिन लेना शुरू किया आफ्टर 3 मंथ्स मुझे ज़्यादा चेंजेस दिखे हैं। 3 मंथ्स में धीरे धीरे चेंज आए। अब विद इन अ ईयर तो ड्रास्टिक चेंज है। जैसे उसको देख के आप बोल ही नहीं सकते हो कि दैट ही हैड माइल्ड ऑटिज्म, तो उसको माइल्ड ऑटिज्म ही था बट अब वो माइल्ड ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम से भी निकल गया। अब जस्ट उसके थोड़े सिम्टम्स रह गए हैं एंड वी आर स्टिल इन टच विद नवदीप सर। वी आर स्टिल टेकिंग द मेडिसिन। उनकी जो भी गाइडलाइंस है, बीट डाइट, बीट उनका यंत्र, वी आर डूइंग दैट रिलीजियसली एंड आई मीन इट। विद दैट हम उनको हीलिंग म्यूजिक भी सिखाते हैं जिससे बच्चा इंटरनली भी हील होता है। मेडिसिन हम दे रहे हैं। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दी मेडिसिन एंड फैसिलिटीज। द डॉक्टर्स आर एवरी टाइम अवेलेबल और मुझे हफ्ते में 1 साल से ज़्यादा हो गया, मुझे हफ्ते में 1 कॉल ज़रूर आता है यहाँ से दैट यू नो वेदर द थिंग्स आर गोइंग राइट। विवान के बारे में दे आस्क कि वो कैसा चल रहा है। तो लाइक दे आर इन टच, द होल टीम इज इन टच विद मी मोर देन 1 ईयर। मेडिसिन यहाँ पे टाइम से आ रही है, हमें घर पे डिलीवरी मिल जाती है। जब हमें आना होता है नवदीप सर के हमें कॉल्स आ जाते हैं दैट यू नो वो अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू मीट। तो द एज अ क्रक्स आई एम सैटिस्फाइड विद द मेडिसिन ऑल्सो एंड विद द स्टाफ ऑल्सो। थैंक यू। Another recovery story of autism treatment. Patient name, Bhanu Pratap, age, 6.7 years old, disease, autism. Chief complaints, hyperactivity, speech delay, communication, short sitting, problem with understanding. The parents of the child consulted Dr. Navdeep Sharma on 2nd November 2022 at 11 o'clock am and felt the scope of treatment to work for the child. The chief complaints of the parents of the child were hyperactivity, speech delay and short periods of sitting. The child also did not communicate much.
Within a year of treatment from ND Care, a significant improvement was witnessed in the child. His condition showed positive results with reduced hyperactivity, improved speech, better understanding and longer sitting. He even communicated and expressed his feelings in detail. Participation amongst peers has also increased. The child also participated actively in the school activities and showcased confidence. बच्चे का ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है तो हमारे बच्चे की बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। पहले तो हमारा बच्चा बात भी नहीं करता था, कोई समझता नहीं था, अब इसमें स्पीच भी आई है, अंडरस्टैंडिंग आई है जी। अभी मतलब बैठ जाता है, पहले 10 मिनट भी बैठता था, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है बच्चे में, पहले कुछ नहीं था। तो सारी हमारी तो भावना है ना, पहले हमें पता नहीं था, सरकार को पता होता तो हम पहले से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते, तो हम खुश हैं बच्चे के लिए। बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, उसमें आई कॉन्टेक्ट आ गया है, अंडरस्टैंडिंग आ गई है। फर्स्ट पंचकर्मा से ही दिखने लग गया था कि गोकुल में थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी आ रही है, एक आधे वर्ड्स भी बोलना शुरू कर दिया था। 5वें में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आई है, उसमें इमोशंस आ गए हैं, वो कुछ बातें अंडरस्टैंड भी करने लगी है। मेरे बेटे की अंडरस्टैंडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। You can see our therapists really improved the understanding of autistic kids. पहले शुरू में मेरा बच्चा चीखते थे, हर टाइम अचानक चीखते थे, हर टाइम चिड़चिड़ापन रहते थे, हाइपर था, बहुत ही हाइपर था। मेडिसिन लेने के बाद उसका ये चिड़चिड़ापन, एग्रेशन बहुत ही कम गया है। मेडिसिन के साथ साथ पंचकर्मा भी दिया है और साथ साथ में साइकोथेरेपी भी चल रहे थे। तो ये साइकोथेरेपी, पंचकर्मा और मेडिसिन लाके कुल मिला के मेरा बच्चा अभी बहुत ही बेटर है। You can see our therapist really improved the hyperactivity of autism kids. The Panchkarma therapy here, which has Shirodhara and Nasya in it, and it is really recommended, very relaxing, and everybody and whosoever needs it must go through it. हम लोग अपने बेटे के लिए आए हुए हैं यहाँ पे आयुष्मान मंडल, जिसका उम्र लगभग 14 साल है। यहाँ हम लोग पंचकर्मा थेरेपी लिए। यहाँ का माहौल इतना फ्रेंडली, डॉक्टर, स्टाफ सारे कुछ बहुत अच्छे लगे। पहले ये ना बोलती थी ना कुछ समझती थी, लेकिन जब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं काफ़ी हद तक इसमें इम्प्रूवमेंट आई है। I came in contact with Dr. Navdeep Sharma regarding my son Shritik. So he is 3-year-old and he is having speech delay and he is having some ADHD behavior. It was a good experience. But one thing I can say for sure that my son's sleep routine is pretty much better than before. We came to this center, had an appointment with the doctor. We had a great session with him. He has immense knowledge about autism. He is specialized in autism and Ayurvedic treatments. The therapies were done very well, and the housekeeping and everything was clean. The rooms are clean, so we had a good stay, good interaction with the doctors and therapists. So overall, it was a good experience. उसका पंचकर्मा हुआ तभी उसमें जो हाइपर एक्टिविटी था उसमें हमें बहुत फ़र्क नज़र आया, और उसकी स्पेशली जो स्लीपिंग साइकिल थी वो उसकी एकदम से सेट हो गई। जैसे वो रात में पहले हाइपर होकर उठ जाता था, अभी वो भी उसका बंद हो गया, अभी उसको स्ट्रेट स्लीप मिलती है। ND Care Nirugam, we are committed to creating a supportive and inclusive space for individuals with autism. Our group activities are designed to empower and enrich lives, promoting social connections and overall well-being. Now these activities are one of the most important part of the treatment. Once we talk about a perfect social interaction that can only happen when social activities are being planned. If you are looking for a place where your loved ones can thrive, come join us at ND Care Nirugam. Together, let's empower lives and build a brighter future. Help thousands of children around the world to recover successfully. He believes in the holistic healing power of Ayurveda, addressing the root cause of autism rather than just treating the symptoms. Dr. Sharma combines traditional Ayurvedic practices with modern research and technology to deliver effective and sustainable results.
His commitment to excellence in patient care has earned him accolades and recognition within the Ayurvedic community. Dr. Navdeep Sharma, renowned Ayurvedic doctor, gains media acclaim for expertise and contributions. Call now to connect with world's senior most